Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope all of you are doing well. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Farman Ali, and this is our first lectures related to our course. In this lecture, we will start our course properly. So, it's very important lesson. Try to get it. In this lesson, we will talk what we will study throughout in this semesters. So, and what will be the procedures to cover all our topic that we discussed in the previous lectures in a course introductions. So how we will cover each topic step by step. So very important lesson, and try to get it. Also, this is the complete overview of our course. So I'm going to repeat it again. It's very important subject because of the market point of view. So try to get it and try to understand. If you have any questions related to my course, my lectures, okay, so you can message me, and I have already mentioned my Telegram account, my WhatsApp account on a Telegram channels. So let's get a start. So let's come to the first topic of edu.net. Stand for ActiveX Data Object. A for ActiveX, and D for data, and O for object. So ActiveX Data Object. And now what is edu.net? So edu.net consists a set of objects, majmu'e objects, that interact to provide the interaction with the physical data source. So let me to clear this one from here. So see here. Now let's suppose I have already a database. So this is, for example, is my database, and this is my computer on a client side, okay, and my data is present here on this database on some external data source, this database. So edu.net enable us to interact here. Let's suppose there is some application installed on this computer. So how we can establish a communication between this database and this database. So again, I'm coming toward definitions. There's edu.net consist मुश्तमिल asta a set of object majmu'e objects that can be used to interact with the external data source. So this is actually the job of edu.net. Now let's go forward. A simplified overview of a simple object in edu.net models is listed here. See this diagram. This is the simplified overview of edu.net objects. So I'm going to show this diagram here to see it properly. This one, okay. So if you see here, I'm going to highlight this. This is actually the edu.net portion, this one. So how many objects it's contain? So it's contain 5 objects. How many objects? 5. So the one is connection object,
See here. The second one is a command object. The third one is a data reader object and data set object. Data adapter object and data set objects. So, and this is actually our applications on a client computer which is going to interact with edu.net, and then the edu.net will further communicate with the external data source. So this is your form, or this is actually the form. This is actually the form or application which is going to access your database, which is not on a, maybe on a same computer, maybe on remote computer, and this is the job of, in the middle you see this, the edu.net, to connect these two together. So this is the job of edu.net. It consists 5 important objects, and these 5 important objects can be divided into two categories. So let's see how. This one, if you see this one, this portion is called, it's written here, data providers, and this one portion that you are seeing, this portion is called data set. So let's move toward a PowerPoint. So edu.net classes are divided into 2 components. बदू हिस्सा एक असतो तकसीम शुदो. एक असतो data providers, okay, and the second one is a data set. So let's see that one. See this portion, data provider, and this portion is called a data set. So I'm going to make it Control Z. So let's see what is a data adapter. So data adapters, sometimes called managed providers. इसमें ये managed provider असतो. What is the job of this? Which handle communication with the physical data source. Which handle communications with the physical data source. If this is a physical data source, so the job of data provider to handle communication between these two, external DB, okay, this DB may be any software, any DBMS, DB database, not only database, maybe something else. So data provider handle communication with the physical data source. And now what is a data set? So data set in which represent the actual data. So what will be happen actually? So it's now I'm going to back to my the first I see. So the main job of edu.net to connect this data source with your computer, with your applications. Now data set is actually here is a small database here on a client computer. Okay, the main what's happened, it's contain here some tables and their relationship. So this is actually a small database on your in your applications, so which contain data, so and which represent the actual data. Either component can communicate with the data consumers. What is the job of this? The consumer, the farm, then using data from this local data source to provide disconnected environment.
So this me, I'm going to check a bit this what's happened here. So it's okay. So what is a data set? Data set is actually a small database reside on your applications, and it will be filled from database, okay, and now the data will be available here locally, and then from this small database your application going to consume your data. سابقا database خود دور است نه حقیقی database physical database वो خود دور است هر وقت به वो کانکت شدن مشکل است. edu.net دیتا میاره از یه دیتابیس اینجا لوکال به دیتا ست یه ذخیره میکنه. درست است که هر وقت به سرور نیاز نداشته باشه و اینجا به دیتا ست یه ذخیره میکنه. بعد از یه فارم شما که است و همراه یه دیتا ست که است کار میکنه. خب I'm coming toward this one again in a great detail when we are coming toward when we covering one of the object that is a data adapter. So let's so edu.net classes are divided into two categories. बदू हिस्से तकसीम मिशा data provider and data set. data provider कैस्तो हमारे external data source इर्तिबात फ़ाल में कना और data set कैस्तो वो ब application कैस्तो ये कुचक data base अस्तो कुदाम के हमारे application है शुमारा data रा शरीक में साजा हो. So what is a data provider? Data providers the data provider component are specific to a data source. साइब कने मो आले इन जगह पर गुप्तम ना कि ये data provider के कुदामस्त ये data provider शमसाय कने बेबी नहीं यारा ये डेटा प्रोवाइडर सेक्शन ये हमारा ये हर डेटा सोर्स के अस्तो वो जुदा जुदा अस्तो ये फिजिकल डेटा सोर्स के अस्तो हमारा हर एक जुदा जुदा अस्तो चले कि ये डेटा सोर्स हो तन्हा एक होने से ये मुख्तलिफ में आया बतौरी मिसाल एक्सेस अस्तो दुरुस्त अस्तो मे बी इट्स विल बी एन एक्सेस दुरुस्त अस्तो मे बी कॉर्नर में करना ये रहा maybe is MySQL asto drus asto so MySQL maybe drus asto yeah maybe this will be SQL server. So the data may be in any data source. हाँ आले अगर ये डेटाबेस बदाखिल एक्सेस अस्तो या बदाखिल MySQL अस्तो या बदाखिल SQL सर्वर अस्तो या ब Oracle अस्तो या ब दीगर चीज़ अस्तो या ब SQL लाइट अस्तो हमरे हर डेटा सोर्स केस्तो मुख्तलिफ डेटा प्रोवाइडर इस्तेफादा मिशा वो खुद जुदा जुदा डेटा प्रोवाइडर दारा कि वो बफहमा कि ये एक्सेस जी रकम डेटा ज़ख़ीरा बकर दो कि वो फॉर्मेट ब edu.net ब डेटा प्रोवाइडर मालूम में बोशा दुरुस्त अस्तो. सो बराए हर रकम डेटा सोर्स जुदा जुदा डेटा प्रोवाइडर अस्तो सी रकम डेटा प्रोवाइडर के अस्तो ब .NET फ्रेमवर्क खुद ब खुद इंस्टॉल मेशा दुरुस्त अस्तो यक अस्तो मखसूस अस्तो बराए SQL डेटा प्रोवाइडर हमरे SQL सर्वर कार में कना दुरुस्त अस्तो दोम के अस्तो ODBC stand for Open Database Connectivities. I mention here Open Database Connectivities. ये क्या अस्तो डिज़ाइन फॉर कनेक्टिंग रिलेशनल डेटाबेसेस. ये हमारे हर रकम रिलेशनल डेटाबेस ची वो हो के बाद वो सॉफ्टवेयर बकुदाम के डेटा रिलेशनल डेटाबेस ज़ख़ीरा में बशा रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस याद में शब बकुदाम के डेटा बशक्ल टेबल है ज़ख़ीरा में शा वो क्या अस्तो रिलेशनल डेटाबेस अस्तो. सो रिलेशनल डेटाबेसेस आर दोज डेटाबेसेस इन विच द डेटा आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. So we can use this ODBC data provider can be used for each kind of
relational databases. OLEDB data providers. OLEDB data provider is a generic provider that can communicate with any relational database as well as a non-relational databases. ये हमेशा OLEDB की कदम प्रोवाइडर असतो, ये आज ODBC कमा के एडवांस असतो, ये हमराई रिलेशनल डेटाबेसेस हम इस्तेफादा हमेशा और हमराई नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस मसलन MongoDB असतो, दुरुस्त असतो, हमराई वो के मस्तो इस्तेफादा हमेशा या XML फाइल असतो या Excel फाइल असतो एटसेट्रा, हमराई वो हमेशा के शुमा इस्तेफादा बकोने. ये दूता के असतो, ये कोलन के असतो, ये डेटा प्रोवाइडर, ये मुकम्मल API असतो. आले अगर बतौर मिसाल शुमा में गए कि मो edu.net के असतो हमराई SQL लाइट इस्तेफादा बकोनम, दुरुस्त असतो, हमराई SQL लाइट इस्तेफादा बकोने. ये प्रोवाइडर सेक्शन के कुदाम असतो वो बायत के शुमा डाउनलोड बकोने चले कि ये डेटा प्रोवाइडर मालूम असतो कि ये डेटा बकुदाम शक्ल ज़ख़ीरा असतो. सो लेट्स मी टू क्लियर इट. So okay, let's move forward. The three data provider include edu.net and include in the .NET framework contain the same object. یک رقم چندین تا adapter है कि में बोशा कुल्लन के अस्ते یک रकम object है द्वारा, although their name and some of the properties and methods are different. हाँ बाज़ी कोदाम डेटा adapter है कि अस्ते बबू अस्माई कमा के जुदा जुदा अस्तो और मेथड एक हम फर्क दौरा माल खुद तकरीबन 80% ये कुल्लन एक रकम अस्तो. The SQL provider object begin with the SQL. For example, साहब को अगर डेटा एडाप्टर है, डेटा एडाप्टर माई SQL एडाप्टर असतो, बदाखिल ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट के असतो, इसमें वो ची में बोशा SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट. अगर डेटा प्रोवाइडर ODBC डेटा एडाप्टर असतो, बाद अज बदाखिल वो के कुदाम ऑब्जेक्ट में बोशा दुरुस्त असतो कनेक्शन ऑब्जेक्ट, वो में बोशा ODBC कनेक्शन. आले वाइल अगर एडाप्टर OLEDB डेटा प्रोवाइडर असतो, दुरुस्त असतो, बाद इसमें कनेक्शन में बोशा OLEDB कनेक्शन में बोशा. बाबा में ये कहना खेले आसान असतो, डेटा प्रोवाइडर मुख्तलिफ असतो, चरे के डेटा सोर्सेज मुख्तलिफ असतो. .NET फ्रेमवर्क के शुमा इंस्टॉल पर कर दे से रकम डेटा प्रोवाइडर खुद ब खुद इंस्टॉल में शा. यक के अस्त SQL सर्वर डेटा प्रोवाइडर खुदाम के हमरे SQL डेटाबेसेस SQL सर्वर डेटाबेसेस इस्तेफादा में शा. ODBC डेटा प्रोवाइडर बराए हर रकम रिलेशनल डेटाबेसेस इस्तेफादा में शा. ODBC डेटा प्रोवाइडर बराए हर रकम रिलेशनल डेटाबेसेस as well as non-relational databases istifada mission. Baba mere yera. So that's we covered about the data providers. Data providers. This one. I don't know what's happened to this. So we covered. Now this section we cover this one. So now let's get a start. If you see the diagram here, so first we cover these three things, and then we are coming toward this one, the connection object. We are talking about this object, connection object, and then we will come toward this object, then we will come toward this object, this one, and finally we will come to the second part of edu.net. So
What is a connection object? The connection object represent the physical connection to the data source. The job of this one to connect with the physical data source. Let us see this one. To connect your data source, I don't know what's happened to this. So I need to make it clean. So let's suppose this is our database, external database, and this is our local API or application which is going to access that external data source. So now this may be there may be a lot of computer. So the connection connect your software which is installed here, this application with external data source. So the job of the connection object. Its properties, kudam properties ke ba connection object asto determine the data providers. Yem पैदा में कने के शुमा as kudam किस्म adapter istifada में कने the data source and the database to which you want to connect and the string to be used during connecting. شما ये कोई असल एक ऑब्जेक्ट است شما ऑब्जेक्ट जोड़ में कने वो ऑब्जेक्ट के است कनेक्शन شما बस बतौर स्ट्रिंग नविश्ता में कने درست است ये मालूमात कल्लन के است बदाखले वो स्ट्रिंग नविश्ता में बाद از हर वक्त के ما कनेक्शन जोड़ में कने ब شما खुद बखुद मालूम में कि ये मालूमात शमा ची रकम बायत के नविश्ता बकने खब फॉर टाइम बीइंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट connect your application edu.net direct with the external data source. So you have to provide the different information to this connection object. For example, what is the IP address of your computer where the your database is stored, what is the name of database to which you want to connect, what is the username, what is the password, etc. This information will be given to the connection object when you are going to create it. So later on we will talk about it, how to give this information. Mega connection object application है शुमारा ब external data source ब बिरूनी data source मतलब ब database connect में करना दुरुस्त है तो बदाखिले ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट बैद के शुमा मुख्तलिफ किस्म मालूमात नविश्ता बकने कि ये डेटाबेस बखुदाम कंप्यूटर है तो IP एड्रेस या इसमें वो कंप्यूटर नविश्ता कने इसमें डेटाबेस बैद के नविश्ता बकने चर के शायद के उन जगह या तो डेटाबेसेस में बोशा और दिगा ये के पासवर्ड चीज़ तो यूज़र नेम चीज़ तो वगैरह ये कुल्लन मालूमात बैद के शुमा बकनेक्शन ऑब्जेक्ट नविश्ता बकने Its methods कदम मेथड है फंक्शन है कि बदाखिले ये ऑब्जेक्ट अस्तो वो fairly simple वो खेले सादा अस्तो मसलन you can open and close a connection शुमा में तो ने connection open बकोने connection close बकोने सिर्फ नविश्ता में कोने connection dot open connection dot close. You can also change database and manage transaction as connection object शुमा में तो ने के डेटाबेस कनेक्शन ओपन बकने डेटाबेस कनेक्शन क्लोज बकने में तो ने के आज यक डेटाबेस शुमा कनेक्शन कट कोने दीगर डेटाबेस कनेक्ट कोने में तो ने के हमराय कनेक्शन के हमराय ट्रांजैक्शन में तो ने के कार बकने. सो दैट इज अबाउट अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट. कनेक्शन ऑब्जेक्ट लिंक योर एप्लीकेशन विद द एक्सटर्नल डेटा सोर्स. So hope this will be clear. So let's move toward another object, command object. So the command object represent the SQL statement or store procedure to be executed at the data source. But database के शुमा कुदाम SQL statement है कि शुमा याद गरबते SQL statement याद अस्तो select हो delete हो update हो ये रकम statement है कुदाम के शुमा ब database इजरा में कोने
شما او استیتمنت های به کدام جای نوشته میکنه؟ به کماند آبجکت نوشته میکنه. کماند آبجکت استور پروسیجر شما را اجرا میکنه یا اسکیمل استیتمنت شما را که است به دیتابیس اجرا میکنه. Command object can be executed can be created and executed independently against a connection object. ये हमारा connection object ज़्यादा इर्तिबात न दरा independent अस्तो and they are used by the adapter object to handle communication from a data set back to the data source. ये statement क्या अस्तो आले برای شما مشکل است که ما یه را اکسپلین بکنم و هر وقت که ما پیش میرم انشالله یه خود به خود به شما کلیر می باشه. یک چیز به شما یاد می باشه که کماند دیتا اداپتر کدام که سوم نمبر next we are going toward data adapter. دیتا اداپتر آبجکت داخلی طور از کماند آبجکت هم استفاده میکنه یا به الفاظ دیگه یہ کماند آبجکت به داخل دیتا اداپتر آبجکت استفاده میشه. The command object can support SQL statement. شما میتونه که به داخل command object SQL statement های نوشته کنه select update delete and store procedure میتونه که اسم store procedure نوشته بکنه. command object میتونه یک value return کنه that return a single values maybe one values میتونه یک value return کنه میتونه more sets of values میتونه که زیاد value return بکنه rows میتونه که زیاد rows return کنه or no value at all یا میتونه که بالکل value return نکنه. command object میتونه که statement های اجرا کنه SQL statement های یا store procedure به جواب میتونه که یا یک value ریٹرن بکنه یا هیچ ولیو ریٹرن نکنه یا میتونه زیاد رو را ریٹرن بکنه. سو کماند آبجکت که است استفاده میشه که اسکیمل استیتمنت های شما را از کلاینت ساید بگیره. این جگه که شما کدام استیتمنت های سلکت و وغیره یه را نوشته میکنه درست است سلکت وغیره it's difficult to write on a screen. خب سلکت استیتمنت یا select یا अपडेट درست است अपडेट वगैरह ये स्टेटमेंट है कि شما نوشته بکردی که وظیفه کماند آبجکت ये است که یه را از یه طرف ببره و بالا بس اسکیمل به سرور یه را اجرا بکنه درست است. هر وقت که وہ اجرا بکرده بعد از پس که می آیا میتونه که ویلیو بیاره میتونه که نبیاره میتونه که زیاد ویلیو بیاره وہ ڈیپینڈ آن نیڈ است. So I hope this will also be clear. The next one object is a data reader object. Data reader is a fast, low overhead object for obtaining forward only data, read only stream of data from a data source. डेटा एडाप्टर या डेटा रीडर एक दिगा ऑब्जेक्ट असतो वजीफा ये चीज असतो डेटा वजीफा ये असतो कि ये में तो ना कि सर्वर सिर्फ बराए शुमार डेटा सिर्फ बेरा सर्वर यक रिकॉर्ड बराए शुमा मेरा यक दाना बखातिर ये ज्यादा लोडेड नेस्ट ओवरहेड ये कम असतं चरा के कार वजीफा ये सादा असतं बस सिर्फ ये सर्वर के असतं यक रो बराए शुमा पाइन मेरा. So this is the main job of the adapter the data reader object. ये हो कनेक्शन ऑब्जेक्ट असतं कनेक्शन मुहिम असतं खूब برای هر رقم دیتابیس شما باید که اول کانکشن آبجکت جوړ کنه بعد از میتونه که از توسط کماند آبجکت به دیتابیس مختلف عملیات انجام بده. خب the data reader object
कैन नॉट बी क्रिएट डायरेक्टली इन अ कोड. ये ऑब्जेक्ट शमा डायरेक्ट बकोड नवीसी जोड़ करदा नमी तो नहीं ये के बाद इस मा हर वक्त जोड़ में कनम शमा और बाद इस खुद में भी नहीं ये तफसीलन हर ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल कुल्लन तफसीलन में खाने में बाहर ऑब्जेक्ट के इस्तो यक यक चैप्टर अस्तो और बाद इस इंशाल्लाह मा कवर में कनम दे आर क्रिएटेड ओनली बाय कॉलिंग एग्जीक्यूट रीडर मेथड. आप कमांड ऑब्जेक्ट अस्तवस्तुत कमांड ऑब्जेक्ट शमा में तो नहीं के डेटा रीडर ऑब्जेक्ट रा बस वाजी जोड़ बकरे. So that is all about a data reader. Data adapter object. So what is the job of data adapter object? So the data adapter is functionally the most complex object in a data provider. ये data provider शमा की चंदीन ता data provider object है इधर ये 4-5 तक के नविष्टा अस्तो ये कुल्लन के complex के कुदाम अस्तो वो अस्तो कुदाम या को data adapter object ये ज़्यादा complex अस्तो चरे कि वजीफ़ा ये खेले सख्त अस्तो हर वक्त के माँ ये बाद हमरा ये बकोड नवीसी कार में कनम शुमा ये रमे भी नहीं कि ये चिर कम मुश्किल कार अंजाम में दा. सो इट प्रोवाइड ब्रिज बिटवीन अ कनेक्शन एंड डेटा सेट. ये चिक और में खना ये दरअसल वजीफ़ा ये खेले मुश्किल अस्तो अवल खो शुमा कनेक्शन जोड़ में कने बाद डेटाबेस को हमरा शुमा अस्तो बस सर्वर बतौर मिसाल ये मौजूद अस्तो ये डेटाबेस मौजूद अस्तो ब क्लाइंट साइड या कुचक डेटाबेस में बोशा इसमें वो अस्तो डेटा सेट हो डेटा सेट. Try to understand, it's difficult to write on a mouse. So this is a data set. What is the job of data adapter object? Data adapter object provide completely disconnected environment. Listen here, disconnected environment. Disconnected environments we means as disconnected environments माना ये अस्तो कि अगर बाला ब सर्वर यक या दू टेबल असतो दुरुस्त असतो या ज्यादा टेबल आहे असतो एडाप्टर ऑब्जेक्ट वो कुल्लन डेटा टेबल मेरे इन जगह हमरा कुल्लन चीजें बदाखिले वो डेटा कुल्लन चीजें इन जगह यक या दू या से चंदीन तक में बोशा वो टेबल इन जगह इंतकाल में कोना ब डेटा सेट हो बादस आज डेटा सेट के असतो और ये कनेक्शन बादस कट में शा कनेक्शन कट में शो टेबल के बेवर द डेटा सेट कनेक्शन कट शुदो ये की में कोना ये डेटा एडाप्टर में कोना डेटा एडाप्टर ये कार अंजाम में था डेटा एडाप्टर ये वजीफा अंजाम में था दुरुस्त था. सो डेटा एडाप्टर की ये वजीफा अंजाम में था टेबल इन जगह ब क्लाइंट साइड बेवर दो कनेक्शन के इन जगह कट शुदो बाद ये एप्लीकेशन के इन जगह कोदाम इंस्टॉल अस्तो डेटा में गिरा आज ये लोकल टेबल दुरुस्त अस्तो बई लोकल टेबल बाजी डेटा जदीद इजाफा में शा बाजी डेटा कदीमी के बई अस्तो वो डिलीट में शा दुरुस्त अस्तो यू आर गेटिंग मी और नॉट बाजी डेटा बई जदीद वरद में शा बाजी अपडेट में शा बाजी के अस्तो डिलीट में शा हर वक्त के अमलियात खुद रे इन जगह खलास शुदो बाद इस वजीफाई डेटा एडाप्टर ये अस्तो कि कुदाम तगीरात के इन जगह बे आमदो वो बाद इस दोबारा फ़ाल बकना कनेक्शन फ़ाल बकना बाद इस वो तगीरात बाला बालाई ब असल टेबल के अस्तो वो इंतकाल बकना ये कारी एडाप्टर अस्तो कार बफा में दिखे टेबल में यारा लोकल ब लोकल डेटा सेट ये ज़ख़ीरा में करना बाद कनेक्शन खलास में शा कट में शा शुमा हम इंसर्शन डिलीशन ब ये लोकल टेबल अंजाम में दे हर वक्त के कुल्लन अमलियात खुद रखलास ब कर दी बाद ये वजीफ़ा डेटा एडाप्टर अस्ते कि ये डेटा आले ये जदीद डेटा अपडेटेड डेटा आज ये जाए वगैरह बाला बट ओरिजिनल टेबल ये बबर कि वो हम हंग बश. दिस इज द मेन जॉब ऑफ द data adapter. So it provide a bridge between connection and data set.
The data adapter contain 4 command object. बदाखिल एक adapter object दाखिल 4 ta command object है में बाश चंदा 4 ta. Number 1 select command, update command, insert command, delete command. असमा ये वाज़े हस्तो ये कमांड सिर्फ सिलेक्शन में करना. सिलेक्शन मतलब ये कि वजीफा ये हस्तो कि आज बाला डेटाबेस टेबल बियारा इंजिगा बियारा डेटा बियारा भाई ये लोकल. That's me. I'm going to make Control Z. हाँ दिगा कंट्रोल Z नहीं. वजीफा ये डेटा अडाप्ट सेलेक्ट कमांड ये है कि ये अजबाला डेटा बेरा इन जगह ये ज़ख़ीरा करना. कमांड अपडेट कमांड ये अपडेट कमांड ये वजीफा ये है कि ये इन जगह की कुदाम तगीरात बशुदो अपडेट कुदाम की अपडेट ज़रूरत दरा पूरा बाला इंतकाल करना. दुरुस्त है. इंसर्ट कमांड वजीफा ये है कि अगर इन जगह बई जाए कुदाम रिकॉर्ड जदीद इंटर शुदो पूरा अजीजे इंतकाल बकना ब डेटा सेट ब ओरिजिनल टेबल ब डेटा सोर्स हो. डिलीट कमांड वजीफा ये है कि अगर बई टेबल कुदाम रिकॉर्ड कम शुदो कि वो रिकॉर्ड बाद आज बाला आज असल टेबल बैद के कम बोशा नो 4 ता कमांड है जुदा जुदा ये दौरा. सो साहिब कने एक एडाप्टर ऑब्जेक्ट के 4 ता कमांड है ऑब्जेक्ट है दौरा. सो दैट this is the most complex object, zyad complex object asto. The data adapter use the selector command to fill data set and use the remaining 3 commands to transmit change back to the source. मेगा ये एक कमांड इस्तेफादा में कोना सेलेक्ट की जगह डेटा बेरा ये बकाया से के अस्तो आज ये तरफ इस्तेफादा में शक कि बाला मालूमात पस बबरा. Now this is our final object, which is data set object. आले data set में ये दिगा object है कम explain कर दें कि data set चीज़ है तो data set is a memory reset representation of the data. Data set दरअसल बक्लाइंट साइड के अस्ते चीज़ है तो बक्लाइंट साइड के अस्ते मुकम्मल डेटाबेस असतो. इन जगह एक कुचक डेटाबेस असतो बाई बक्लाइंट साइट हो. Dataset can be considered as somewhat simplified relational database consist of table and relationship. बदाखिल ये डेटासेट ची में बोशा टेबल और रिलेशनशिप में बोशा. कुदाम रिलेशनशिप ची रकम के बाला बड़ डेटाबेस में बोशा अमू रकम के अस्तो इन जगह बड़ डेटा सेट में बोशा. So the data set is always disconnected from a data source. Data set के अस्त as original data source के अस्त ची में बोशा disconnected में बोशा. कनेक्शन बमावेने ये न दश्ता बोशा. एक बार के कनेक्ट बशुदो डेटा आज ये जाए बई जाए कॉपी शुदो बाद आज ये कनेक्शन चिमेशा ये इर्तिबात के अस्तो खलास मेशा. आले डेटा इन जगह में बोशा शुमा इन जगह इंसर्शन अपडेशन डिलीशन और अंजाम में दे हर वक्त आज ये स्क्रीन बई लोकल दुरुस्त और के अंजाम बदे दे बाद एक बार सेव में जाने वो मालूमात के अस्त आज ये जाए इंतकाल में शब बिरुन ब डेटाबेस. So database is disconnect में बोशा. Data set is composed of 2 primary object, but data set दो दाखिली दिगा primary object में बोशा. एक table collection अस्तो. Data table collections contain 0 or more data table object. बदाखिले डेटा टेबल कलेक्शन एक टेबल में बोशा या ज़्यादा टेबल में बोशा which are turn made of 3 collections. बदाखिले टेबल ची असतो टेबल कलेक्शन असतो. बदाखिले टेबल कलेक्शन ची असतो टेबल ऑब्जेक्ट है असतो. बाद अस बदाखिले टेबल ऑब्जेक्ट ची असतो कॉलम ऑब्जेक्ट में बोशा रो ऑब्जेक्ट में बोशा कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट में बोशा. बदाखिले टेबल ची असतो को कॉलम असतो रो असतो कंस्ट्रेंट असतो. और यह दोम के अस्तो डेटा रिलेशन
रिलेशन कलेक्शन में बोशा ये कलेक्शन कुल्लन रिलेशनशिप है कि कुदाम बमाबेन टेबल है इंजिगा अस्तो या दू या सी टेबल है अस्तो कुदाम कुदाम रिलेशनशिप के ये दारा वन टू वन वन टू मेनी वो दाखिले हम ये कलेक्शन में बोशा सो दैट्स इट फॉर टुडे. This is all the 3 lectures, okay, all the 5 objects that we will cover throughout in this semester and much more about it. So let's see a brief overview, a complete overview about the today lesson. So let's see this one, see carefully. edu.net na साहेबकने ये complete overview असतं, complete picture असतं खूब असतं शुमा ये रबे बने मा अवल edu.net मारिफी कर देम ये ची असतं a set of consist a set of objects that interact to provide the interaction with the physical data source. edu.net ची असतं edu.net के असतं मजमुए क्लासेस असतं ये क्लासेस असतं के शुमारा बिरूनी डेटाबेस ची में कोना कनेक्ट में कना या हमरा बिरूनी डेटा सोर्स इर्तिबात फाल में कना लेट्स मी आई एम गोइंग टू चेंज इट हो बाद इस edu.net के कोदामस्त बदू बख्शे तकसीम शुदो यक के असतो डेटा प्रोवाइडर असतो दुरुस्त असतो एक के असतो डेटा प्रोवाइडर असतो दोन के असतो डेटा सेट असतो ये बख्श के कोदामस्तो ये बख्श के कुदाम असतो ये डेटा प्रोवाइडर असतो ये बख्श के कुदाम असतो ये डेटा सेट असतो. हो लेट्स सी दिस वन. So what is the data provider job? Also called manage provider which handle communication with the physical data source. ये हमारा external data source communication फाल में कोना डेटा प्रोवाइडर अमा बकुतम के मुख्तलिफ रकम प्रोवाइडर असतो सी रकम प्रोवाइडर खुद ब खुद इंस्टॉल में शा वो हर वक्त के शुमा .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल बकर दे वो सी कुदाम असतो स्केवल हमरा स्केवल डेटाबेसेस इस्तेफादा में शा अगर ये डेटाबेस स्केवल में बशा स्केवल डेटा एडाप्टर इस्तेफादा में शा ODBC दो मस्तो ODBC बराए हर किस्म रिलेशनल डेटाबेस इस्तेफादा में शा OLEDB असतो OLEDB हमरा हर किस्म रिलेशनल डेटाबेसेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस इस्तेफादा में शा. सो दो ऑब्जेक्ट ची असतो ये में खानम ये रहा डेटा सेट ची असतो. सो डेटा सेट is the in which represent the actual data. So see here I'm going to drag a line between these. This is complete edu.net. This is the data provider section, this blue area that you are seeing, and this one is a data set, okay, and this is also a data set. And this one is a connection object. Okay, and then see the definition. This one is a command object, and this one is a data adapter object, and this one is a data reader object. See, this is the complete diagram of edu.net. So what's how we will study this. So साहिबकने मा ये रब कुदाम शक्ल में खानिम इंशाल्लाह आले सबर बकने अजान मेशा
خب نو انشالله ما یه را که میخوانیم طریقه ما یه می باشه که ما اول از کدام جای شروع میکنم انشالله به نکست کلاس ما شروع میکنم از دیتا ست از دیتا ست شروع میکنم آل دیتا ست که است वो डायरेक्ट कदम चीज नसतो बट डेटा सेट दाखिल टेबल असतो और रिलेशन असतो नुमा अवल के असतो डेटा सेट कंप्लीट खलास में कनम मतलब ये कि अवल टेबल जोड़ में कनम दुरुस्त लेट्स मतलब ये कि मैं अवल टेबल जोड़ में कनम दुरुस्त असतो टेबल जोड़ में कनम बट टेबल के अस्त कॉलमाई जोड़ में कनम बाद अज रो जोड़ में कनम बाद अज रो के अस्त डेटा इंसर्ट में कनम बदाखिल टेबल वो कुल्लन अमलियात अंजाम में दम दुरुस्त अस्त बाद अज वो के खलास शुदा बाद अज दो टेबल है चिरकम लिंक में शा बाद अज वो टेबल है चिरकम ब डेटा सेट ऐड में शा बाद अज में आयम बकदाम ऑब्जेक्ट बाद अज वो में आयम ब कनेक्शन ऑब्जेक्ट में आयम वरा के खलास बकरदम कंप्लीट चैप्टर است بعد از वो में आयम ब دوم नंबर के कदम است درست است دوم नंबर के कदम सोम नंबर में आयम ब कमांड ऑब्जेक्ट वो कमांड ऑब्जेक्ट इंशाल्लाह तफसीली कंप्लीट एक चैप्टर است वरा में खाने में मुख्तलिफ अमलियात चीरे कम अंजाम दादा में शा बाद از में आयम ब डेटा रीडर ऑब्जेक्ट में आयम 4 नंबर ब 4 नंबर में आयम ब डेटा रीडर ऑब्जेक्ट वर इंशाल्लाह एक रोज कुल्लन एक दर्स बये में बोशा बाद از एक ऑब्जेक्ट में माना वो است डेटा एडाप्टर कुल्लन में खनम एक दो रोज ये में गिरा ये इंशाल्लाह के खलास बकर दे मैं कोर्स शुमा इंशाल्लाह खलास में शा ये 5 ऑब्जेक्ट के मां बखंदिम ब edu.net 5 मुहिम ऑब्जेक्ट असतो एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट असतो कमांड ऑब्जेक्ट असतो दुरुस्त असतो डेटा रीडर ऑब्जेक्ट असतो डेटा एडाप्टर ऑब्जेक्ट असतो और डेटा सेट ऑब्जेक्ट असतो मां आज डेटा सेट शुरू में कनम दुरुस्त असतो नो ब डेटा सेट अवल टेबल असतो सबा इंशाल्लाह ब नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मा आज डेटा टेबल इंशाल्लाह शुरू में कनम खेले आसान असतो खूब प्रैक्टिस से वकन प्रैक्टिस खेले ज्यादा जरूरत दौरा खेले मुहिम सब्जेक्ट असतो सो ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन दिस always try to practice only you need a practice. So that's it for today. Thank you for listening and have a good day. My peace, health, happiness be with you in every walk of your life. Have a great day. Thank you.